Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, today we will, as you know, that we are on chapter number 3, that is flowers and seeds, and today I will deliver its 6th lecture. So, my dear students, let's quickly move forward towards the recap. So, quickly revise that what we did in the previous lecture. Listen to the question very carefully and then answer them. Which part of the embryo develops into roots? Radicle. Very good. Describe function of cotyledons in dicot. Very good. They store food in them and provide energy. Very nice. So, my dear students, now let's move forward towards today's student learning outcome, that by the end of today's lecture, all the students will be able to describe the structure of a seed and demonstrate its germination. Today, the students will be able to compare and contrast the structures and functions of a chickpea and maize seed. So, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Have you thought about what you cultivate? Is it you who make it germinate or are we the germinator? So, my dear students, Allah Ta'ala is saying in the Quran कि जब आप ज़मीन में एक बीज को बोते हैं तो कौन है इस बात पर कादिर कि वो उसको उगाए या ज़मीन से बाहर निकाले और उसको तनावर दरख्त बनाए या पौधा बना दे? क्या हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, बल्कि ये खुदा ताला की ज़ात है जो कि इन चीज़ों के ऊपर कुदरत हासिल रखती है. So, my dear students, let's move forward towards the pre-reading question. What is germination process? When a tiny plant comes out of a seed, that is called germination. What is the meaning of hypogel? Very good. Hypogel means that under the ground, under the soil. So, my dear students, now I request you all to please open germination of maize and chickpea seed in chapter number 3. I hope everybody has opened the page. So, my dear students, let's start the reading. Quickly put your fingers where I will read. Germination of maize and chickpea seed. Germination is the process by which a plant grows from a seed. So, my dear students, एक ऐसा process जिसके अंदर plant जो है वो seed से बाहर आता है, that is called germination. The most common example of germination is the sprouting of seedling from the seed of an angiosperm. So, my dear students, जब भी आप किसी पौधे को, जैसे किसी सीड को ज़मीन में निकालते हैं तो आपको थोड़े दिनों के बाद एक नन्हा सा पौधा जो है वो उसके बीज से बाहर निकलता हुआ नज़र आता है. ये एग्जाम्पल जो है ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर कॉमन है या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है ये कॉमन है और इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. Maize and chickpea seeds, though belong to different categories, germinate in similar manner. So, my dear students, क्योंकि maize जो है this is monocot and chickpea is dicot, but still they germinate in the same manner which is called hypogel germination. यानी कि इन दोनों के अंदर hypogel germination होती है. The word hypogel is derived from the Greek word hypo, which means below, यानी कि नीचे, and gel means earth, यानी कि ज़मीन के नीचे. In this type of germination, cotyledons remain inside the soil. यानी कि हाइपोजल जर्मिनेशन एक ऐसी जर्मिनेशन होती है जिसके अंदर जो कॉटिलेडन होता है, सीड के अंदर जो कॉटिलेडन होता है वो जमीन के नीचे ही रह जाता है. सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड हाइपोजल जर्मिनेशन. और मेज और चिकपी, वन इज मोनोकॉट एंड अदर इज डाइकॉट, बट स्टिल दोनों के अंदर हाइपोजल जर्मिनेशन होती है. स्टेम डाइकॉट्स हैव एपीजल जर्मिनेशन ऑल्सो, यानी कि उनका जो कॉटिलेडन है वो जमीन के बाहर आ जाता है, जैसे कि बीन सीड्स वगैरह में. Examples of plants showing hypogel germination include maize, pea, rice, gram, groundnut, etc. Hypogel mode of germination has the following characteristics. So, my dear students, अब हम hypogel germination जो है उसके characteristics के बारे में जानते हैं. In this type of germination, the seed, that is cotyledon, remains inside or below the soil. The cotyledons play no role in monocot seeds in term of photosynthesis. यानी कि इनका photosynthesis से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे ही रह जाएंगे. There is a greater elongation of the epicotyle और इनके अंदर epicotyle भी होता है. The terminal end part of epicotyle is curved to protect plumule. अब मैं आपको epicotyle दिखाती हूँ कि where is epicotyle.
First of all, let's look at the tidbit. Coleorrhiza and coleopatile are protective coverings of radicle and plumule respectively. So my dear students, here you can see in a monocot seed, ये मेज का सीड है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइपोजल जर्मिनेशन हो रही है. मैं आपको ये सारी एक्सप्लेन करती हूँ. और सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये सीड के अंदर से जो है, दिस इज एपिकोटाइल. ये एपिकोटाइल जो है ये प्लूम्यूल के और कॉटिलिडन के दरमियान में होता है और ये बड़ा होता है और प्लूम्यूल को एलोंगेट करता है ताकि ये जमीन से बाहर जाए. और ये कोलियोपेटाइल है जो कि प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है. यहां नीचे अगर आप देखें तो ये रेडिकल है और कोलियोरिजा जो है ये रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है. नाउ हियर यू कैन सी रेडिकल कन्वर्टिंग इनटू रूट्स. ये रेडिकल है जो कि ग्रो होगा एंड इट विल टर्न इनटू रूट्स. सबसे पहले सीड के अंदर से रेडिकल ही ग्रो होकर बाहर आता है एंड इट मेक रूट्स. उसके बाद एपिकोटाइल जो है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग आउटवर्ड्स और इसकी जो टिप है दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल और ये जो टिप है ये शूट्स के अंदर चेंज हो जाएगी एंड दिस इज द स्टेम. सो आप ये देखें कि ये एपिकोटाइल है, ये जमीन से बाहर आता है एंड द प्लूम्यूल चेंजेस इनटू द फर्स्ट लीव्स एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेम. सो दिस इज द जर्मिनेशन इन एक मोनोकॉट मेज सीड. अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूं चिकपी प्लांट के अंदर जर्मिनेशन. सो व्हेन यू सो द सीड यू कैन सी कि ये जो कॉटिलिडन है ये जमीन के नीचे ही रहेगा और रेडिकल जो है इट विल ग्रो इनटू रूट्स और एपिकोटाइल और प्लूम्यूल जो है दे विल ग्रो एंड डेवलप इनटू स्टेम एंड द फर्स्ट लीव्स ऑफ द प्लांट. और आप देखेंगे कि थ्रू आउट जो है the cotyledon will remain under the soil. So again we can see कि chickpea plant which is chickpea seed which is dicot and maize seed which is monocot both have hypogeal type of germination. So my dear students, now I will draw monocot and dicot seed और मैं आपको इनका दिखाती हूँ कि where is epicotyle, where is cotyledon ताकि आपको एक दफा रिविजन हो जाए. So let's draw it. So here you can see on one side I will draw a monocot seed. अब this part is testa or you can see seed coat. Then here you can see the embryo. So this is embryo. ये पूरा जो है ये एम्ब्रियो है. दिस इज एंडोस्पर्म एंड देन हियर यू कैन सी दिस इज द कॉटिलिडन and this is plumule and the top part is called coleopatile and here this is epicotyle then the last part is called this is coleorrhiza and this is radicle. So this is how the radicle will grow into roots and epicotyle and plumule will grow into shoots and the first leaves of the plant. So then comes the dicotyledon. So dicotyledon में आपको दो cotyledon leaves इसके नजर आएंगे. So these are the two cotyledons.
This is all embryo. There is no endosperm and dicots. और इसमें epicotyle, this is epicotyle. This is plumule. This is radicle. So this will grow into roots and this will grow into the first leaves and the shoots of the dicots. So my dear students, this is a rough sketch ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि दोनों में क्या फर्क है. Where is the plumule, where is the radicle, क्योंकि ये थोड़ा सा confusing हो जाता है. So मैंने इसीलिए handmade diagrams बनाई, though they are not very neat, but still you can get the structure of it. So my dear students, now let's move forward towards the practice. For practice, you will download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, here you can see a dicot chickpea seed, और आपको इसको label करना है, इसके different parts जो हैं. So it's very easy. You can also take help from the book, and it's extremely easy. And then you will write down the characteristics of hypogeal mode of germination. अभी हमने hypogeal mode of germination के characteristics पढ़े हैं, आपको उनको लिखना है यहाँ पर step by step. You can also take help from the book, but try to write it yourself in your words. Okay? Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. Quickly answer the questions. Explain the meaning of word hypogeal. Very good. So my dear students, now quickly note down the homework. For homework, you will do MCQ number 10 of exercise A in your books given on page number 48. And you will do question number 8 from exercise B given on page number 48. And question number 6 from exercise C also given on page number 48. You will do both the questions in your notebooks. So this is your homework, and we will move forward towards the wrap up. So today the students have learned that the common examples of germination is the sprouting of a seedling from the seed of an angiosperm. In the hypogeal germination, the seed remains inside or below the soil. So my dear students, आज हमने different modes of hypogeal germination पढ़े. इसके बाद इसके अलावा हमने जो चिकपी और मेज सीड है उनकी जर्मिनेशन के बारे में भी पढ़ा कि दोनों जो है उनके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.